पूरी दुनिया ने देखी ओबामा की विदाई। My fellow Americans, it has been the honor of my life to serve you. पूरा हुआ 8 साल का सफर। We're on live TV here. I got Michelle. अमेरिका की आवाज बने ओबामा। We have taken out tens of thousands of terrorists, including bin Laden. बदलाव की राह पर ओबामा की विदाई। No foreign terrorist organization has successfully planned and executed an attack on our homeland these past 8 years. दुआओं में याद रखना। I committed to President-elect Trump that my administration would ensure the smoothest possible transition, just as President Bush did for me. जो अमेरिका से टकराएगा वो खत्म हो जाएगा। We're balanced in Atlanta. ISIL will be destroyed, and no one who threatens America will ever be safe. ओबामा को नहीं भूलेगा अमेरिका। You believe in a fair and just and inclusive America. ओबामा का अधूरा सपना। America is a better, stronger place than it was when we started. कौन है ओबामा का बेस्ट फ्रेंड? Michelle and I have been so touched by all the well wishes that we've received over the past few weeks. ओबामा का आखिरी भाषण। God continue to bless the United States of America. Thank you. आठ साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने आज शिकागो में फेयरवेल स्पीच देते हुए लोगों को शुक्रिया कहा। बराक ओबामा ने कहा कि अमेरिका की जनता ने उन्हें एक अच्छा राष्ट्रपति बनने के लिए प्रेरित किया। बराक ओबामा ने कहा कि जिस वक्त उन्होंने सत्ता संभाली उसके मुकाबले आज अमेरिका ज्यादा मजबूत है। ओबामा के भाषण के दौरान लोगों ने 4 साल के नारे लगाए, कहा कि 4 साल और। ओबामा ने कहा कि यह संभव नहीं है। ओबामा ने कहा कि अमेरिका में अगले 10 दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। I can't do that. Now, this is where I learned that change only happens when ordinary people get involved and they get engaged and they come together to demand it. After 8 years as your president, I still believe that. अपने 8 साल के सियासी सफर को पूरा करने के बाद आज बराक ओबामा ने अपनी फेयरवेल स्पीच में अमेरिका की जनता को अलविदा कह दिया। व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति के विदाई भाषण की परंपरा को तोड़ते हुए बराक ओबामा ने शिकागो से अपना विदाई भाषण दिया। अपने 8 साल के कार्यकाल को सफल बनाने के लिए ओबामा ने अमेरिका के लोगों का धन्यवाद कुछ इस अंदाज में किया। It's good to be home, my fellow Americans. Michelle and I have been so touched by all the well wishes that we've received over the past few weeks. But tonight it's my turn to say thanks. 20 जनवरी 2009 को बराक ओबामा ने अमेरिका के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाली
अपनी सियासी पारी को सफल बनाने के लिए बराक ओबामा ने अमेरिका के लोगों को एक उम्मीद जगाई। Yes, we can. ओबामा के यस वी कैन वाले इस मंत्र पर अमेरिका के लोगों ने पूरा भरोसा किया और इसी भरोसे के जरिए ओबामा ने अपना 8 साल का राष्ट्रपति पद का सफर पूरा कर लिया। If I had told you 8 years ago that America would reverse a great recession, reboot our auto industry, and unleash the longest stretch of job creation in our history, if I had told you that we would open up a new chapter with the Cuban people, shut down Iran's nuclear weapons program without firing a shot, take out the mastermind of 9/11. अपने 8 साल के कार्यकाल में अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए बराक ओबामा ने अमेरिका के लोगों को आने वाले दिनों के लिए भरोसा दिलाया कि वो अमेरिका के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की मदद करने को हमेशा तैयार हैं। In 10 days, the world will witness a hallmark of our democracy. No. The peaceful transfer of power from one freely elected president to the next. I committed to President-elect Trump that my administration would ensure the smoothest possible transition, just as President Bush did for me. Because it's up to all of us to make sure our government can help us meet the many challenges we still face. अपने कार्यकाल में बराक ओबामा ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराने के साथ आतंक पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को भी धन्यवाद दिया। Because of the extraordinary courage of our men and women in uniform, because of our intelligence officers and law enforcement and diplomats who support our troops, no foreign terrorist organization has successfully planned and executed an attack on our homeland these past 8 years. And although Boston and Orlando and San Bernardino and Fort Hood remind us of how dangerous radicalization can be, our law enforcement agencies are more effective and vigilant than ever. We have taken out tens of thousands of terrorists, including bin Laden. The global coalition we're leading against ISIL has taken out their leaders and taken away about half their territory. ISIL will be destroyed, and no one who threatens America will ever be safe. And to all who serve or have served, it has been the honor of my lifetime to be your commander-in-chief. But protecting our way of life, that's not just the job of our military. Democracy can buckle when it gives in to fear. So just as we, as citizens, must remain vigilant against external aggression, we must guard against a weakening of the values that make us who we are. And that's why for the past 8 years, I've worked to put the fight against terrorism on a firmer legal footing. अपने करियर के शुरुआती दिनों में रंगभेद की भावना से परेशान ओबामा ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। अब ओबामा को लगता है कि लोगों की इस सोच में बदलाव आया है। There's a second threat to our democracy, and this one is as old as our nation itself. After my election, there was talk of a post-racial America. And such a vision, however well intended, was never realistic. Race remains a potent and often divisive force in our society. Now, I've lived long enough to know that race relations are better than they were 10 or 20 or 30 years ago, no matter what some folks say. You can see it
not just in statistics, you see it in the attitudes of young Americans across the political spectrum. अपने विदाई भाषण में बराक ओबामा ने अमेरिका को दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बताया। ओबामा ने कहा कि अमेरिका के सामने चीन और रूस नहीं टिकते हैं। Rivals like Russia or China cannot match our influence around the world unless we give up what we stand for and turn ourselves into just another big country that bullies smaller neighbors. अपने विदाई भाषण में भावुक होते हुए बराक ओबामा ने अपनी पत्नी मिशेल को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया। बराक ओबामा ने एक बार फिर अपना 8 साल पुराना यस वी कैन फिर से दोहराया, जिससे उन्होंने अमेरिका की सियासत की शुरुआत की थी।